attention now, viewers, to a story that has concerned people across the nation, which is of the killer cough syrups. 11 deaths have occurred. 11 children have lost their lives after they consumed the cough syrup. The situation unfolding in Madhya Pradesh as well as Rajasthan, sparking nationwide concern. Now, the children are said to have consumed the cough syrup that is suspected to be the cause. They suffered kidney injuries. Investigations are ongoing to confirm the role of the medicines and the direct link. The Health Ministry held a meeting on Sunday, which was chaired by the Health Secretary. The focus was to find out whether there was a link between the consumption of the cough syrup as well as the deaths of 11 children in Madhya Pradesh and Rajasthan. We have, in fact, more breaking updates now coming in as investigations in the case continue. The Madhya Pradesh Chief Minister will visit Chhindwara, the location of the district where the deaths have occurred. After the children died, the MP Chief Minister will review the situation and will be meeting the victims in Chhindwara. Now, Mohan Yadav will be visiting the hospital. This is amid the concerns over the cough syrup. Now, remember, questions are continuing to be raised. In a lab in Tamil Nadu, there are concerns that have been flagged already that there are ingredients in the cough syrup that could have led to the deaths of the children. So it has been flagged in Tamil Nadu already. A probe has already been ordered, not just in Madhya Pradesh, but also Rajasthan as well as Gujarat as well, because an alert has been sounded across the nation. My colleague Makrand is joining us on the broadcast with the details. Makrand, amid the concerns over the deadly cough syrup, the MP Chief Minister will be visiting Chhindwara. What are the details? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा जा रहे हैं। 1 बजे वो छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। पलासिया में जो बच्चों की जिनकी जहरीले कफ सिरप पीने से मौत हुई है, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस कफ सिरप को लेकर के जांच पहले ही चल रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट से पत्राचार हुआ था और उसमें भी मध्य प्रदेश सरकार ने जांच की मांग की और साथ ही साथ जो कंपनी है जहां पर इस कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उस कंपनी पर एक्शन लेने की बात कही गई है। अब एक एसआईटी भी बनाई गई है और बहुत जल्द ये टीम जो है वो तमिलनाडु भी जाएगी और वहां पर भी जो कंपनी के ओनर्स हैं उनसे भी चर्चा करेगी और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे मामले में अब एक्शन देखने को मिल रहा है। खुद मुख्यमंत्री का जाना, जाहिर सी बात है कि छिंदवाड़ा में आज कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी एक बड़ी लापरवाही रही है जिसमें एक्शन की जरूरत है। और चूंकि ये मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सभी जगह पर ये जांच अब शुरू हो गई है कि कहीं ये कफ सिरप वहां पर सप्लाई तो नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के अब पूरे देश में ही चर्चा छिड़ी हुई है, जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। Okay, all right. Makrand, thank you for joining us with those details. We'll come back to you for those updates through the day today. The Chief Minister is visiting. The question still remains, what is the action that will be taken against the manufacturer? The crackdown on these killer cough syrups is on in full swing across the nation. In fact, several states, including Madhya Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu, have banned this medicine already. Within just hours of receiving the Tamil Nadu investigation report yesterday, the MP Chief Minister Mohan Yadav also announced a statewide ban on cold reef, calling the deaths extremely tragic. Now, the cough syrup that led to these deaths is called cold reef cough syrup. In Rajasthan, 2 children died after consuming the cough syrup from Cason Pharma. The state government has banned the syrup along with 19 other medicines from the company, and 3 health officials have also been suspended. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है हमने जांच करवाई गई और अभी भी हमारी कमेटी जो है विस्तृत रूप से जांच करने में लगी हुई है। प्रारंभिक तौर पे जो पाया गया है कि चिकित्सकों द्वारा दोनों ही जो है सीकर और भरतपुर में जो है वो बच्चों को दवाई नहीं लिखी गई है। जो परिजनों के से बातचीत करने पर पता चला कि परिजनों ने अपने स्तर से जो है उनको दवाई दिला दी गई, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत में खराबी आई है। बाकी जो हमारे अन्य सहयोगी विभाग है उनके स्तर पर दवाओं के जो है नमूने लिए गए हैं और नमूने की जांच की जो है कार्रवाई की है। तो जब जांच आएगी उसके अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो 2 बच्चों की मृत्यु के मामले जो सामने हैं, उन बच्चों के पहले से ही जो है उनके निमोनिया के कारण थे और उनको भी जो है चिकित्सकों द्वारा जो है ये दवाई जो है वो नहीं लिखी गई है। इस प्रकार से जो है मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि आज तक जो है ना अभी तक चिकित्सकों द्वारा ये दवाई नहीं लिखी गई। एक जो सीकर की जो घटना सामने आई थी उसमें लिखा गया था, उससे उनकी कार्रवाई की जा रही है।
Meanwhile, in Tamil Nadu, the state's Food and Drug Administration has also conducted tests on the Cold-Rough syrup manufactured by Srisan Pharma and found that the levels of diethylene glycol were significantly high. It was much above the permissible limits. The Chhindwara police, in a big crackdown, have also filed an FIR against the Tamil Nadu pharmaceutical firm for culpable homicide and sale of adulterated drugs. An SIT panel has also been formed to probe the deaths of the children in Chhindwara. Today as well, many developments expected as the Chief Minister will also be visiting the district. We're keeping a track of that. For now, slipping into a short break. We'll be right back.